Hello everyone, the Conceptual IS welcomes you all, and in this session we are going to cover Sociology PYQs, means last 20 years में जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हाँ, थंबनेल में जरूर ये सबसे पहले आपको दिखता होगा कि केवल 10 ईयर का जिक्र करता है, बट लेटर वी shifted our idea cover more questions, so we are covering questions came from 2004 to 2023, 20 ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक वाइज होना है, तो जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग टॉपिक पे यूपीएससी मेंस में आए हुए ऑप्शनल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? ज़्यादा फोकस होगा अप्रोच पर, एनालिसिस पर, एंड ठीक है, ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे होगा। अप्रोच एंड एनालिसिस समझना जरूरी है, सो दैट कि आप इन आंसर्स को अपने अपने स्किल, अपने मेमोरी, अपने रिवीजन के अकॉर्डिंग यूपीएससी मेंस में परफॉर्म कर सकें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आया था 2022 में, और ये 20 मार्कर की कैटेगरी में था। 20 मार्कर कैटेगरी को आपको लिखना हो 300 वर्ड्स में। ठीक है, जो 20 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनको अप टू 300 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। एक और चीज़ देखो, 250 स्टैंडर्ड कहा जाता है, बट आप उसको थोड़ा सा खींच के रखोगे। 250, 260, 270, 300, ये लाइन आप लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो द एनलाइटनमेंट पीरियड, अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव्ड वे फॉर इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी? द एनलाइटनमेंट किस एस्पेक्ट ने सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए रास्ता बनाया? ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा सा है बस, बट और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, एनलाइटनमेंट पीरियड कब था बेसिक? तो इट वाज बिटवीन 17 to 18th century. It laid down the groundwork for the emergence of sociology in several key ways, and following are the important aspect in this regard. तो हम लोग इसमें ये ध्यान देंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिसने सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए रास्ता खोला, जिसने सोशियोलॉजी की इमरजेंस के लिए एक माहौल तैयार किया, वो ग्राउंड तैयार किया, जिसके तौर पर एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तौर पर सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। ठीक है, तो आई डोंट थिंक जो हमारे इस साल के बैच के बच्चे हैं उनके लिए इस क्वेश्चन में ज़रा भी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज ये सारे एस्पेक्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए थे। और जिनको नहीं पता, नया बैच शुरू हुआ है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी जो भी क्लासेस मिस हुई होंगी उनको आपको अलग से एक्स्ट्रा संडे क्लासेस में करवा दिया जाए। अभी कुछ ही क्लासेस, 7-8 क्लासेस होंगे। ठीक है, तो क्या क्या डेवलपमेंट थे उस समय के, कब के? एनलाइटनमेंट पीरियड के। तो एनलाइटनमेंट पीरियड कब था? ये 17th and 18th सेंचुरी में। तो इट लेड द एम्फोसिस ऑन रीजन एंड ऑब्जर्वेशन। इसने एनलाइटनमेंट पीरियड ने रीजन एंड ऑब्जर्वेशन को पुश किया। और इसके जो की थिंकर्स थे वो कौन थे? जॉन लॉक, रेनी डेस्करेट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम समझेंगे कि आखिर ये रीजन एंड ऑब्जर्वेशन किस तरह से सोशियोलॉजी के लिए ग्राउंड तैयार करता है। तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एनलाइटनमेंट थिंकर्स चैंपियन द रीजन ऑब्जर्वेशन कैसे प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जो एनलाइटनमेंट पीरियड के थिंकर थे वो रीजन और ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपना नॉलेज ले रहे थे, और इसकी वजह से उन्होंने चैलेंज किया किसको? ट्रेडिशनल रिलायंस ऑन रिलीजियस डोगमा को। तो रिलीजियस डोगमा के ट्रेडिशनल रिलायंस थे उसको इन्होंने चैलेंज किया। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चर्चेज यूज्ड टू बिलीव इन यूरोप दैट अर्थ इज इन कॉइन शेप, बट discovered that Newton discovered that Earth was not coin in shape, rather it is ball in shape or oval in shape. ठीक है, it is spherical. Therefore, churches punished Isaac Newton. But scientific development of those period started questioning the authority of not only Rajtantras, not only monarch, but also churches. Therefore, the latter observer, certainly thinker, just like John Locke, René Descartes,
started understanding the sociology based on regions. What regions persist, what region led to the development of the next region, how people are associated, how people have collaborated to form some institutions, agencies and organizations, why they behave in certain manner. So everywhere varieties of questions asked, and why become dominant factor, why become dominant. This led to Renaissance, this led to Enlightenment. In Enlightenment period, religious authorities, their beliefs, certainly religious dogmas were questioned. Scientific approach led to the study of society, certainly emergence of the sociology as a subject discipline. Okay, so this was basically by the idea of John Locke and Rene Descartes. Some other things were processed on those period. For example, belief in social progress. Enlightenment period thinkers used to believe social progress, so they focused, they aimed, they desired goal. Based on those goals, they started to understand, they understood social progress, social fabric, socio relationship of those periods. Montesquieu, Voltaire were the pioneer of these ideas. The Enlightenment fostered optimism about human progress. Optimism. What religious institution used to do? They suppressed the individual views. They suppressed progress. They suppressed many things which supposed to challenge their authority. But these thinkers used to understand the ideas and the development, the progress of the society based on their understanding. So they tried to pave the way for further progress of the society. They suggested newer ideas, and hence they adopted the idea of reasoning and reform together. Here reasoning and reform came together to form optimistic outlook, which motivated the sociologists to understand the factors influencing what social change and development. So किन किन फैक्टर से सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट आ सकता है, थिंकर्स ने उन पे फोकस किया. इन इन सोशियोलॉजिस्ट ने further importance of individual right and liberty rose to such a level. Here John Locke and Jean-Jacques Rousseau and Locke basically contributed on the emphasizing individual right, and they took critical examination of existing cultural institutions, especially churches and monarch. Sociologists questioned how these structures, which structures? Churches, monarchs, especially France, in Germany, especially in Spain and England. Basically, these were the development of Western Europe. Western Europe pioneered for the emergence of sociology. So, how these structures impacted what? Individual and society as a whole. Therefore, further in Enlightenment period, focus was laid on the social contract. Social contract is something that suggests why individual obey society. Means individual supposed to get something from the society. So initial idea was the social security. Initial idea was the psychological benefits, and that's why society used to obeyed by the individual. So social contract tries to explain why individuals obey society, and Hobbes, Locke, Rousseau were pioneers to explain social contract. The concept of social contract means an agreement between individual and the society for mutual benefit. Mutual benefit means if society progress, individual progress, society progress, because society concerned about individuals and individual obey society, which laid down the foundation of understanding social order, social relationship between individual and state. Why in state was obeyed by individual? Because region of security, psychological security, social security, and security from the neighboring kabilas, or later you can say state. Why? Because Europe was struggling
during the since during the dark period where Kabilas used to attack over other, try to snatch property, try to snatch their women, try to snatch whatever they have earned, try to suppress and murdering. Sociologists explored how these social contracts shaped societies and find later comparative analysis of society were done by Montesquieu. Montesquieu contributed during the Enlightenment period, and he compared what? He compared and contrasted societies. So he took the idea to compare how one society is different from the other, how one society and their social relations are different from other, how one geographic situation and climatic situation shaping the society, and how society, I mean individual was affected by these socio climatic and geographical factors. So this comparative approach become the cornerstone for sociological research. Therefore Montesquieu tried to understand the natural way how nature is affecting, geography is affecting individual at one place, and how nature and geography and climate is affecting individual in other place. If there is certain relation, certainly reasoning going to dominate. So Enlightenment period was dominated by what? Enlightenment period was dominated by the reasoning of the time, questioning of the time, and the why factor dominated everywhere. And the father of sociologists named Auguste Comte. Auguste Comte took many research and provided a way for emergence of sociology in very positivistic way. So his idea was positivism. Therefore, positivism was one basic and pioneer idea which tries to explain socio-cultural relations based on the scientific. So this was known to be positivism. इसको हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं. इन केस अगर आपको हिंदी भी साथ में कोई बचा है, प्रत्यक्षवाद. Positivism was प्रत्यक्षवाद. Who pioneered Auguste Comte? So he took his study from the 3 stages of development. First stage he used to say was religious stage, when religion used to be deterministic factor. Religion used to define how society should progress. Religion used to dictate the terms and conditions. Churches used to control over the moral explanation, moral behavior, and moral rights of the individual. So who has those ideas? Who had those ideas? Churches used to. Therefore, in second stage, first stage was based on religious explanation of social relation, social development, religion. Let me correct it. Religion. Second was philosophy. Philosophy took the main chair to explain the social relation, and therefore people started using logic. And the latter third stage, which was pioneered by Auguste Comte, was positive. Positive state was based on the scientific explanation of social relation. That positive stage led to the development of concrete shape, because it was based on the idea of science, and especially natural science. So positive state gave the real shape to sociology. Fine. And Emile Durkheim, who was pioneer for their understanding of social fact, and he tries to explain the social fact based on the scientific principles. He explained the social fact as an external to individual, and therefore he tries to impose the idea of social fact over the individual. And he said that
Social facts are external to individual, and social facts control, decide how individuals should act in a society. So he explained the impact of social fact on individual and individual behavior. Therefore, Enlightenment period emphasis on study of society as a distinct entity beyond individual action. So now you can write a brief conclusion for your first question, and conclusion can be in the way that how society was shaped, how Enlightenment period took the chance to question the authority of institutions of those period, especially churches and monarchs and other institutions who used to dictate the terms and conditions for the conduct of society. Basically, they were two: one was church, other was monarch, and laid the foundation of scientific study of the social phenomena, and thus led to sociology as a scientific discipline. Fine. So now that was the question asked in UPSC 2022 from the emergence of sociology, and in 2020 there was a question: how did intellectual forces led to emergence of sociology discuss? No change. Largely the answer will remain same as we discussed for earlier question of 2022. Discuss the historical antecedent of the emergence of sociology as a discipline. Again, in 2019 similar question was asked. Only change will be done, few thinkers will be added, which we will cover at the later point. For example, Karl Marx, Max Weber, Max Mead, and many more. We will discuss in upcoming questions. Fine. So, okay, a few second introduction to our new batches. Our new batches for Hindi medium has started. English medium batch will took shape within next week. हम नेक्स्ट वीक से इंग्लिश मीडियम बैच भी लेके आ रहे हैं सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी इंग्लिश बैच, ठीक है। अच्छा, जिनको अभी भी डाउट है कि सोशियोलॉजी कितना बड़ा ऑप्शनल है, तो आप देखिए रैंक 2, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 6, ये सभी सोशियोलॉजी से हैं। तो लास्ट 4-5 ईयर्स में आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी ने बॉम्बार्ड किया है फाइनल सिलेक्शन। तबासना भेजने के मामले में सोशियोलॉजी नंबर 1 ऑप्शनल है, ठीक है। तो हाँ, इसमें जो मार्किंग पैटर्न है सोशियोलॉजी में वो साइंस के सब्जेक्ट जैसा है। देखिए 329 विशाल शाह, 312 ट्रस्टी, 318 अनु कुमारी, 300 Ananya Das. There are many toppers. From the sociology. Every year nearly 150 to 200 selections comes from sociology. Therefore, you should opt for this optional, and this is phenomenal. Why? Because this is phenomenal because it smallest optional. सबसे छोटा syllabus है इसका. Smallest optional, easiest language, सबसे सरल भाषा है इसकी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा हो आपकी, जो भी मीडियम हो, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। नया बैच शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर करिए दिए हुए नंबर्स पे, ठीक है। नंबर्स कहाँ दिए हैं, 1 मिनट, तो नंबर्स नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिले हैं तो वो कहीं भी पा सकता है, जगह जगह दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये नंबर हैं, ठीक है। ओके, तो वी विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, sociology is preeminently study the modern society. Sociology is preeminently study of modern society. तो कैन वी से कि सोशियोलॉजी अपने आप में मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी है? ये इसको एग्जामिन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, पता चलेगा। स्टेटमेंट सोशियोलॉजी इज प्रीएमिनेंटली सोसाइटी इज पार्शली ट्रू, मतलब दिस इज नॉट फुली ट्रू, देयर आर सम अदर वेज। तो व्हाट आर द first we will understand why it is true, what makes it true. So while sociology emerged in 19th century alongside the rapid social change of modern era, it has broadened the scope. It was even beyond the modern society. How? So first we will understand why sociology arose with modernity. Fine. So it was basically because of industrial revolution led to rapid socio-economic changes, brought individual industrial revolution during the 18th and 19th centuries, which started from the England, later
spread to Germany, France, Spain, even later in America, which created industrial revolution, created urbanized society, urban centers. Urban centers was based on the class, which means there were some ruling elites, and more than 90% were sufferer of the poverty, and this led to class conflict, as explained by Karl Marx. Early sociologists like Frederick Laplace during the 19th century, and Karl Marx during the 19th century aimed to understand transformation and their impact on human structure. That how social structure was changed was what led to the conflict, how conflict led to the development of newer feature and the rise of middle class was major outcome of the industrial society. So need for newer explanation. One more thing was need for newer explanation in modern society. Traditional explanation based on religion and social hierarchy couldn't adequately explain the complexity of modern society. मॉडर्न सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और इसकी वजह से सोशियोलॉजी ऑफर्ड अ साइंटिफिक अप्रोच टू एनालाइज. Here we need to pay attention a bit on Durkheim, Herbert Spencer, and Auguste Comte, because these were the people who took this scientific approach for the explaining the social phenomenon, what social relations, right? So sociology offered a scientific approach to analyze changes and understand forces shaping them. That what forces shaping sociology to form, what forces shaping individual to align in certain way, what forces were shaping village to form, urban center to form, industries to form, nation to form. Therefore, thinkers who focused on modern societies were Emile Durkheim and Max Weber, very pioneer. So, Emile Durkheim studied social solidarity, how society function in face of rapid modernization. रैपिड मॉडर्नाइजेशन में सोशियोलॉजी कैसे फंक्शन कर रही है, सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है, और इसमें कुछ लोग कैसे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दे आर बिग. Numi was the idea of Emile Durkheim. He was supposed to explain the normlessness of those period, why some people not followed the norms during the did not follow the norms during the industrial revolution. They became based on economic idea. He explained social problems that could arise in modern society. ये सब कहाँ पे अराइज हो रही थी? मॉडर्न सोसाइटी. मतलब डरखाइम के हिसाब से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन न होते, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न होते, शायद ये कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमिक नेचर लोगों का नहीं होता. Somewhat he is true, but there are other ways. So how Max Weber tries to explain? Max Weber identified that bureaucracy led to gluing factor of the societies or of the people, and this led to rationalization of modern societies larger extent. This led to creation of nation. मैक्स वेबर ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी ने सोसाइटी को रैशनलाइज किया. रैशनलाइज करने का मतलब उसने कुछ सर्टेन रूल्स को पूरी सोसाइटी पे एक्सप्लेन, और इसकी वजह से जो लार्जर सोसाइटी फॉर्म हुई उनमें बेसिस क्या हुए, कहीं पे लैंग्वेज, कहीं पे एथनिसिटी, कहीं पे सोशल वैल्यूज, जिसकी वजह से यूरोप में नेशन स्टेट क्रिएट होना शुरू. ये नेशन स्टेट मॉडर्न पॉलिटिक्स पे बेस्ड थे. ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक फाउंडिंग पिलर. ठीक है. इसके अलावा जो राजतंत्र हैं, राजतंत्र की जो बाउंड्रीज थी वो काफी कॉन्फ्लिक्टेड थी. उन कॉन्फ्लिक्ट को किसने हैंडल किया? रैशनलाइजेशन. वो रैशनलाइजेशन क्यों आया? बिकॉज देयर वाज रैशनल ब्यूरोक्रेसी. So negotiations used to happen during those period, and this led to modern political nation. नेशन स्टेट अगर मॉडर्न पॉलिटिकल प्रिंसिपल पे नहीं होते तो ये आज भी लड़ रहे होते बॉर्डर के लिए. ठीक है. तो सोशियोलॉजी बियॉन्ड मॉडर्निटी. अब ये मॉडर्न सोसाइटीज जो डेवलप हुई हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास, जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है हमारे थिंकर्स के द्वारा, कुछ लोग उससे सहमत. कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ थिंकर्स का मानना है कि सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी के अलावा भी कुछ को इतना सिंपलिस्टिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तो व्हाट वर दोज फैक्टर्स? वी विल अंडरस्टैंड नाउ हाउ सोशियोलॉजी गोज बियॉन्ड
how sociology goes beyond to modernity and some initial factors. However, sociology has evolved compass broader field of study. कैसे कैसे सोशियोलॉजी धीरे धीरे अपने आप में एक ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी बन गया। तो एक एक पॉइंट समझेंगे। कंपैरेटिव एंड ग्लोबल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट नाउ स्टडी नॉट जस्ट मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पे ध्यान दो, सोशियोलॉजिस्ट आर नाउ स्टडिंग नॉट जस्ट मॉडर्न सोसाइटी बट मोर व्हाट, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं, एंशिएंट, ट्राइबल, है ना। आपको पता है मार्क्स ने एंशिएंट सोसाइटी की स्टडी की, ट्राइबल सोसाइटी की भी स्टडी की, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्री मॉडर्न सिविलाइजेशंस एंड डायनामिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। So globalization is the latter phenomena of the industrial revolution. So we cannot say that sociology is limited to only societies or industrial society. Earlier, even Marx used to believe that sociology as a discipline was the outcome of the industrial society, but he would have realized that it is not the complete truth. It is only a partial truth. So what else? Focus was on social change. What type of social change? That different disciplines have analyzed social change across the different time period and society, not just the specific changes of the industry. केवल उन चेंजेस को नहीं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में हुए हैं, बल्कि उनसे काफी आगे बढ़ के सोशल चेंज को समझने के लिए और सारे डिसिप्लिन साथ में आए। ठीक है। और थिंकर्स हु स्टडीड बियॉन्ड द मॉडर्न सोसाइटीज, वो थिंकर्स जिन्होंने सोशियोलॉजी को मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्निटी के बियॉन्ड समझने की कोशिश की, जिन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बियॉन्ड सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश की, उसमें पायनियर थे फर्डिनेंड टोनिस, जिन्होंने आइडिया दिया अपना जेमिन सॉफ्ट का एंड जेसल सॉफ्ट का। जेमिन सॉफ्ट क्या है? तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज थी, उनकी स्टडी को टोनिस ने जेमिन सॉफ्ट बोला, और जो मॉडर्न सोसाइटी और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है उनके लिए टोनिस ने जेसल सॉफ्ट का एग्जांपल दिया। तो इसलिए हम इसको सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी पे लिमिट नहीं कर सकते, बिकॉज जेमिन सॉफ्ट एज अ कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज, राइट। तो फर्दर ओके, एमेनुअल वेलस्ट्रिन क्या कहते हैं? ये थोड़ा मॉडर्न है। अभी देखो इनकी डेथ रिसेंट में हुई है, 1930 से 2019 के बीच में इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने वर्ड सिस्टम डेवलप किया, वर्ड सिस्टम थ्योरी, एनालाइजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी जो कैपिटलिस्ट वर्ड है, और इस तरह से इन्होंने वर्ड सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अकॉर्डिंग टू हिम, वर्ल्ड में एक दूसरे की इनइक्वालिटीज और सोशल चेंजेस को जब स्टडी किए जाएंगे तो धीरे धीरे नेशन स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो वीक होंगी, है ना। दे विल नॉट एलिमिनेटेड सडनली बट दे विल गेट वीकन। सोशियोलॉजी, एक छोटा सा कंक्लूजन अब आपको यहाँ लिखना चाहिए। सोशियोलॉजी's इनिशियल फोकस ऑन understanding the complexities of modern societies were crucial on its emergence. However, the discipline has grown beyond its origin to the encompasses the study of social phenomena across the various time period, culture and context. तो ये हमको समझने की जरूरत है कि किस तरह से सोशियोलॉजी भले मॉडर्न सोसाइटी और इंडस्ट्रियल टाइम के में डेवलप हुआ, लेकिन इसने धीरे धीरे अपने डोमेन को बढ़ाया, अपने ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया, और इसके बाद सोशियोलॉजी अपने आप एरिया पे डिसिप्लिन नहीं रह गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। 2015 का ये क्वेश्चन है, समझेंगे। तो हाउ हैड एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस ऑफ, अगेन एनलाइटनमेंट पे हमने बात की, एनलाइटनमेंट पे हमने जितना भी डिस्कशन कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, तो ले देखिए 3 से 4 आइडियाज हैं, उन्हें भी घूम घूम के आ रहे हैं, कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े टर्म्स चेंज करके यूपीएससी क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट लार्जली वो क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन एनलाइटनमेंट बात की, रीजन इन साइंस, उस समय के जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, हॉब्स लॉ रूसो के बारे में पढ़ा, आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस के बारे में हमने पढ़ा, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, सेकुलरिज्म के बारे में नहीं पढ़ा था। सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो सेकुलरिज्म ने उस समय क्या किया, ये अपने आप में एक शिफ्ट होता है जिसमें जो जो मोरल साइंस की एक्सप्लेनेशन चर्चेस की ओर से आ रही थी, वहाँ पे क्वेश्चन किया गया और डिसिप्लिन को रिलीजियस न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई, जिसकी सोसाइटी को सेकुलर लेंस से देखा गया।
वाट एवर रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस वर प्रेजेंट, उससे मतलब नहीं है, और सोसाइटी को सेकुलर लेंस से समझने की कोशिश की, जिसके चलते सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुआ, सिंपल, बाकी सब बातें वही। एंड एक और क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट आंसर अबाउट, राइट अ शॉर्ट आंसर following in about 120 words. How did emergence of Indian industrial society change family in Western Europe? फैमिली के एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास में, चीज़ों को और अच्छे से समझ। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लरिश्ड, ये क्वेश्चन आया 2013 में। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लरिश्ड इन विद ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट इन यूएसए, मतलब सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज हुई और एक रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड के तौर पर यूएस में वो मैच्योर हुई। क्वेश्चन की डिमांड ये है। आइए देखते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज हुई। हाँ, सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज हुई। में यूरोपियन रूट्स में मेन कंट्रीब्यूशन था अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट वाज सपोज्ड टू बी आर believed to be father of sociology. He coined the term sociology, that's why it is important, and that so for so scientific method of the sociology, scientific method of the study to what social order or progress change was created by whom, August Comte. While Durkheim focused on social fact, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, social fact, norms and values, thus he binds societies to. Karl Marx ने conflict theory, social class, revolution, which significantly influencing the sociology, इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो ये तो यूरोपियन रूट्स हैं, यहाँ से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तौर पे इमर्ज होती है, बट ये अपने आप लास्ट नहीं है। अमेरिकन जो सोशल स्ट्रक्चर था उसने उसमें बहुत सारे विंग्स ऐड किए, सोशियोलॉजी वहाँ पे मैच्योर हुई और डेवलप हुई। हैरियट मार्टिन्यू ने जो पावर्टी इन वुमेन है, अभी तक मार्क्स क्या कह रहे थे, मार्क्स पावर्टी इन फैमिली फैमिली रिलेशनशिप पे स्टडी कर रहे थे कि पावर्टी हाउस होल्ड को कैसे अफेक्ट करता है, वो उसका इकोनॉमिक डायमेंशन था। बट बट हैरियट ने क्या किया, हैरियट ने अमेरिका में सोशियोलॉजी को वुमेन के एंगल से देखना शुरू और पावर्टी इन वुमेन इसको अलग सोचने, फेमिनिस्ट मूवमेंट को बल दिया। He brought European sociological ideas to US and advanced advocated social reform। हमने वुमेन पे अभी बात करी, इसके अलावा लेस्टर बर्ड ने emphasized किया द रोल ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्रेस इन सोशल चेंज, कैसे सोशल चेंज में प्लानिंग एंड प्रोग्रेस एक्ट करता है। He believed in using sociology to solve social problems in society and बॉयस ने क्या, डू बॉयस ने क्या बिलीव किया, डू बॉयस यूज्ड टू बिलीव पायनियर अफ्रीकन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, डू बॉयस स्टडीज रेस जस्टिस। तो इस तरह से जो आइडियाज यूरोप में निकले, हाउस होल्ड और क्लास के हिसाब से सोसाइटी को देखा, अमेरिका में जाकर वो धीरे धीरे छोटी छोटी माइक्रो माइक्रो क्लासेस को स्टडी करने लगता है। वो जेंडर वुमन को एक अलग एंगल से देखता है, ब्लैक रेसेस को अलग तरीके से देखता है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी धीरे धीरे उन चैलेंजेस को सॉल्व आउट करती है, उन क्वालिटीज को स्टडी करती है और सोशियोलॉजी को का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं जिसमें आपको एग्री करना है उस स्टेटमेंट से। ओके, यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड, हाँ सबसे पहले वहाँ इमर्ज हुई थी, ये बात सही है। ठीक है, इस पर कॉमेंट करिए। बट मॉडर्निटी धीरे धीरे कैसे एक्सपेंड कर गई यूएस में और एशियन कंट्रीज में, तो वो आपको भी एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से यूरोप पे डेडिकेटेड नहीं करना। आंसर को मल्टीफोल्ड रखेंगे तो आंसर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइम पे व्हाट मीन्स 500 का डिस्कस, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस लेके आते हैं 500। और डे आफ्टर टुमारो फिर हम लोग सोशियोलॉजी अल्टरनेट डे, हफ्ते में 3 क्लासेस अभी भी नहीं पता। मीन्स 500 जीएस की टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है। ठीक है, सिर्फ 12,500 में 500 आंसर राइटिंग, ऑप्सेस, सेशन सब कुछ मिलता है। सुनो, 10 से 15 मिनट का होता है सेशन, 4 से 5 सॉरी 1 से 1.5 घंटे का होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें करते हैं, मेंस 500। कितने पेपर हैं, 100 पेपर हैं। एक साल में आपको ख़त्म करना है। आपकी मेच्योरिटी पीरियड होगी 31 अगस्त 2025। और सोशियोलॉजी का नया हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो चुका है, हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू होगा नेक्स्ट बैच से।
सोशियोलॉजी का इंग्लिश। इसके अलावा आप सोशियोलॉजी के PYQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप PYQs अपने लिखेंगे, ठीक है, और हमारी वीडियोस के माध्यम से अपना एनालिसिस करेंगे फॉर फ्री। अगर आप चाहते हैं कि कोई इवेल्युएटर आपकी कॉपीज़ को चेक कर दे तो दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस में हमारे पास इवेल्युएटर जो कि आपकी कॉपीज़ को बहुत नॉमिनल प्राइस में चेक कर देंगे, इवेल्युएट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कॉन्सेप्चुअल आईएएस फॉर दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट